Hello people, I'm Jaby Koay, joined by Achara Kirk. What's up? We're looking at CARRYMINATI's social media culture. CARRYMINATI. The other day we did a reaction to cancel culture, the CARRYMINATI video, and I noticed that this came out at about the same time, so I thought that these were sort of like companion videos, and so they need to be watched back to back. And that's why I insisted to Achara that we do this right away. So thank you CARRYMINATI for allowing us to react to this. Very, very much appreciate it. Y'all, if you haven't subscribed already, please do so and hit that bell icon, all notifications, and also vote this video up to let YouTube know you're enjoying what you're watching. I'm sure you've already done it, but make sure you subscribe to CARRYMINATI as well. There's a link in the description below if you want to click on that, give the original video an upvote, and let them know Jaby Koay sent you there. Social media culture, CARRYMINATI. Here we go. Oh, the OG. तुम्हारी मम्मी नहीं हो जिनके खाने में वही स्वाद दोबारा आने लगा है। खैर ये वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, मुझे माफ कर दो। इस वीडियो में तुम ओ ले ली भाई, ले ली खोल के ले ली भाई, मजा आ गया, टारगेट कर दिया भाई। नहीं लिख पाओगे, लेकिन अपनी माँ की उम्र अभी भी मांग सकते। Hold on, reference. You can still ask for your mother's long life. Reference to people who ask for likes in the comments. Do you ever see those? Like this comment and you will have a long and healthy life. I kind of hate those. Yeah. Those are just as dubious as chain emails. Yeah. It's so frustrating. But then there's like a small part of you that goes, I think I ought to like this. I mean, I want my mom to have a long life. And then the logical part of your brain goes, no, shut up. Hold on. What you do? I really, really hate those comments. I hated those chain emails. I hate those comments. And I delete them whenever possible. I loathe them. Stop मैं it. आज बात करने जा रहा हूँ सोशल मीडिया के बारे में। Oh, okay. और मेरा क्या अनुभव रहा है। हो सकता है ये वीडियो देख के तुम्हारी पीठ में से पंख निकल जाए और तुम एंजल बन जाओ। हो सकता है तुम्हें मेरा नजरिया समझ ना आए और तुम बोलो ये क्या लौड़े का इन्फ्लुएंस है, लेकिन तब भी मैं तुम्हारा हाथ मिला के कहना चाहूंगा इट्स ओके, मत मान। मैं चुदा ओ ले ली भाई, ले ली खोल के ले ली भाई, मजा आ गया, टारगेट कर दिया भाई। जस्ट किडिंग। नहीं कोई दिक्कत नहीं है, तुम अपना पक्ष भी रख सकते हो। अगर तुम्हारी माँ की उम्र बढ़ गई हो तो शर्म आती है, वो भी कमेंट करके मांगनी पड़ेगी। कह रहा हूँ यार, मुझे ज्ञान का चौदा कहने के लिए तैयार हो जाओ और शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी के। Oh, no bakchodis? This is trippy. People will get salty. Oh, that's a nice little animation. सोशल मीडिया और असली जिंदगी के बीच की लाइन बहुत पतली है, पर है बहुत जोर से है। जब तुम सोशल मीडिया पे बात करते हो तुम्हारे पास पहले से ही एक कॉन्टेक्स्ट होता है। किस चीज का कॉन्टेक्स्ट के चौधरी? वो निर्भर करता है तुम किस साइट या ऐप पे हो। जैसे जब कोई टिंडर पे चैटिंग कर रहा है तो सबको पता है किस बारे में बात हो रही है। फाइनली ये प्लेटफॉर्म जहाँ बिना रोक टोक के गवर्नमेंट को गाली दे सकते हैं। नमस्ते जी। लेकिन जैसे तुम टिंडर पे बात करते हो वैसे असली जिंदगी में करोगे तो सोसाइटी का थप्पड़ लगेगा और निष्कासित कर दिए जाओगे। ऐसी धूत रगड़ाई होगी जो कोहिनूर की चमक दे। और अब ये साइट्स ऐप सिर्फ एक कनेक्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि एक कल्चर बन चुके हैं। जैसे YouTube या Reddit, जितना कूल तुम्हें एक कल्चर लगेगा उतना तुम उसका हिस्सा बनना चाहोगे। पहले तुम सिर्फ उन कूल लोगों को देखोगे, फिर तुम उन कूल लोगों को रेप्लिकेट करने की नाकाम कोशिश करोगे, लेकिन धीरे धीरे तुम्हारी अपनी पहचान बन जाएगी। और उस वक्त जो लोग कल्चर में नए आए होंगे वो तुम्हें कूल समझेंगे। ये बात बड़ी क्यों है क्या? क्योंकि वो तुम्हारे लिए एक ऐसी जगह बन जाती है जहाँ चाहे असली जिंदगी में लोग तुम्हें बोलते हो तेरा पसीना पे भोसड़ी आ गया इधर, पर वहाँ लोग तुम्हें तब भी कूल समझते हैं। उस कल्चर का हिस्सा होना जान बचा सकता है क्योंकि हम सबको एक ही चीज चाहिए। देशद्रोही का रिटर्न आपके नजदीकी चूतड़ों में नहीं, हम जैसे हैं हमें उस चीज की इज्जत चाहिए। जो जगह वो देती है हम वहीं के। हम सब इंटरनेट कल्चर का हिस्सा हैं, जो और छोटे कल्चर। See that? It's an influencer fan fest. What? No, said, I'm focusing on this. Oh, influencer fan fest, but Fan feast. Fan feast. I read it as influencer fan fest. It's still influencer fan feast 2030. Yeah. कल्चर का हिस्सा है जो और छोटे कल्चर्स में बटा हुआ है। ये छोटे कल्चर्स एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं और कभी कभार एक दूसरे में घुल के एक बड़ा कल्चर बना लेते हैं। इसी खिलवाड़ को कहते हैं सोशल मीडिया कल्चर। Oh yeah. Social media हमारे दिमाग. Wow, he's integrating these animation things. Like, cause I remember he did an animation experiment a while ago. Yeah. And it wasn't like as well received
as like his normal stuff, right? I can't remember. I can't remember either, but I feel like that's what happened. I personally really liked it a lot. I liked it a lot, yeah. I like the integration of the little animation breaks to emphasize the point even further. Yeah, I think they're really cool. I mean, all the stuff that he's choosing is like really funny and suitable for what he's talking about. So far, I'm really enjoying it. But obviously, because we're reading the subtitles and just kind of focusing on the content of what he's saying, I'm not getting as much of the background visuals. Well, because it's moving so fast. Yeah. What is that called when you're comparing yourself to someone on social media and like disappointed in yourself for not measuring up to the very high beauty standards that's put out there in beauty magazines and social media? It's not FOMO. Well, it's not body dysmorphia either. Okay, well, I mean, we get the idea. Yeah, so. There's a lot of comparison that happens, but the thing is, what you have to remember, which I think especially for younger people, it's harder to kind of wrap your head around. It's like most of what you see on social media is not real. It's curated and photoshopped. It's like the highlight reel of someone's life. They might be feeling like shit that day, but they had a nice picture in their photo reel, and then they put a filter on it and put it up, and then all of a sudden, you know, they look like they're living a happy life, but inside they might be crying. कि मन चीज है, चाहे कितना ही दर्द हो रहा हो, खाते चले जाते हैं। इन्हीं भूखमंगी हरकतों की वजह से हमारे दिमाग में डाइवर्सिटी आ चुकी है। पहले हम सोचते थे, भाई रोनाल्डो बनूंगा नहीं तो शाहरुख खान तो बनना ही है, और अब हम सोचते हैं रोनाल्डो शाहरुख खान भाड़ पे जाए, डेड फुलचूरियन बनना, शॉट पे शॉट मारने भाई। भोसड़े के दलाल नहीं हूँ मैं। इसी डाइवर्सिटी की वजह से कभी-कभी हमारा दिमाग भी खराब हो जाता है। ये कोई नई बात नहीं है। जब तुम अपनी जिंदगी दूसरों से कंपेयर करोगे तो अंधेरे के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। हम सब कहीं ना कहीं मान्यता रखते हैं कि जिंदगी एक पिक्चर है और हम उसके हीरो, लेकिन जब ये हीरो का बबल फूटता है, हमारी दुनिया बिखर जाती है। और सोशल मीडिया पे ऐसा किसी के साथ ना हुआ हो ही नहीं सकता। The Sunscreen song says, you're not really in a race with anyone else. In the end, you're really just in a race with yourself. Exactly. Yeah, that's the important thing to remember, because we each have you've said it a bunch of times, we each have our own path to walk, and it's no good comparing yourself to someone else's path. You have your own path. Like, the competition is always with the last version of yourself. Exactly. And timelines are different. Just because someone achieves success really quickly doesn't mean that you're not successful if you're the same age as them and you haven't achieved all of those things. You're just on a different timeline. Right. You know, you're growing at a different rate. Right. You can't compare. I mean, that's not an excuse to rest on your laurels or of course, not work hard, but like, just, you can't beat yourself up for not hitting certain goals at the same moment as someone else. Yes. सोचो तुम एक लोअर मिडिल क्लास आदमी थे जिसकी जिंदगी में इतना पैसा नहीं था, लेकिन तुमने घिसाई करी और अब तुम एक एंटरप्रेन्योर बन चुके हो। पहले ऑल्टो थी, अब होंडा सिटी आ चुकी है। 500 गज का मकान है, सब बढ़िया चल रहा है और तुम्हें लगता है तुमने अपनी जिंदगी में कुछ उखाड़ लिया है। अब तुम जाते हो सोशल मीडिया पे अपने साथ के एंटरप्रेन्योर्स की जिंदगी देखने। बिखर गई दुनिया, हम सबको पीछे रहने का डर है। देखो, दिक्कत तब नहीं है जब तुम और तुम्हारा दोस्त गरीब है, दिक्कत तब है जब तुम्हारा दोस्त अमीर हो गया और तुम अकेले गरीब बचे हो। हमें एग्जाम्पल चाहिए क्या कि चूदी? सोचो तैमूर थोड़ा सा बड़ा हो गया है, उसका 22.5 मीटर लंबा हाईवे पे पोस्टर लगा है, नेटवर्थ अपने बाप से भी ज्यादा हो गई है, लौंडा जिंदगी के सारे मजे ले रहा है और उसके दोस्त थेरेपी ले रहे हैं। और बात उसके पेरेंट्स की नहीं है। ओके, शुरू से शुरू करते हैं। मेरा सपना था कि मैं भी अपने दोस्त की तरह मिलियनर बन जाऊं। मैंने ऐप्स बनाए, बिटकॉइन में इन्वेस्ट किया, पर लगता है मेरा टाइम जा चुका है। कितने साल के हो? लोगों को 3 बताता हूँ, वैसे 5। लेट हो गए भाई, अगले जन्म में ट्राई करो, क्या पता वो दोस्त तुम्हारा बाप बन जाए। मेक सेंस। इस बॉडी का कौन करेगा, आप करोगे? अब कुछ लोगों को ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि कैसे वो सोशल मीडिया पे नहीं है और उनकी जिंदगी तुमसे बेहतर है। My dopamine dose is not social media, it's nature। नेचर के पास जाना चाहिए, नेचर को अप्रिशिएट करना चाहिए, नेचर का पार्ट बनना चाहिए। नेचर नाक पे डसेगा, 15 मिनट में मौत हो जाएगी। 5 साल घुसे रहो नेचर में, पेड़ पौधे तुमसे बात करना चालू नहीं कर देंगे। एक कुत्ता अगर हड्डी ना चबाए तो वो कुत्ता होना छोड़ नहीं देगा। चाहे तुम सोशल मीडिया चलाओ या ना चलाओ, हमारी जिंदगी बिखरती रहेगी तो डालनी पड़ेगी। ज्ञान की चूदी आदत।
सोशल मीडिया पे जिंदगी सिर्फ दिखती ही नहीं बनती भी है। जिनकी थाली सोशल मीडिया भरता है उन्हें कहते हैं इन्फ्लुएंसर्स। वो कैसे ज्ञान की चूदी? आओ तुम्हें उदाहरण देता हूँ। मीवी की सेल चल रही है। मीवी डुओ पॉड्स A25 999 में मिल रहे हैं। इसका Seamless, बेस शरीर में लगती seamless। हड्डियां कड़कड़ा देता है। इसके बड्स में 13 mm ड्राइवर्स हैं जिसकी बारीक ट्यूनिंग कर रखी है ताकि तुम कुछ भी सुनो very तुम्हारे meta. घोड़े खुल जाए। बैटरी बढ़िया है तो तुम घंटों तक अपनी दुनिया में खो सकते हो। और ये है मेड इन इंडिया, मेड इन इंडिया। सबको चाहिए मेड इन इंडिया। भर गई थाली। इन्फ्लुएंसर कैसे बनते हैं ज्ञान की चूदी? इन्फ्लुएंसर बनने से पहले हर प्राणी इंटरनेट के कल्चर का हिस्सा होता है, लेकिन वो कुछ अनोखी और नई चीज लेके आता है जो उस कल्चर के बाकी लोगों को आनंद दिला देती है। लेकिन इतना काफी नहीं है। वो प्राणी इन्फ्लुएंसर तब घोषित किया जाता है जब वो अपने कल्चर की आवाज बन सके। पर इन्फ्लुएंसर और उसके कल्चर की लव स्टोरी के बीच आते हैं हेटर्स। अब ज्यादातर इन्फ्लुएंसर से जब पूछा जाता है हाउ डू यू हैंडल हेट, I don't give them any mental space. मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरे पेरेंट्स को फर्क नहीं पड़ता, प्यार खाओ, प्यार बच्चों पीस, XOXO हार्ट साइन। लेकिन फिर अपनी स्टोरीज में बड़े बड़े पैराग्राफ छाप देंगे, #स्टॉप हेट का कैंपेन चालू कर देंगे। हाँ चलाते हैं हम बोथ साइड। क्या कर लोगे? आधार कार्ड निकलवाओगे? अपने कटर में लगी काय भी ना खिलाओ तुम सुअरों को। आपकी बात नहीं हो रही है। इरादा बुरा नहीं है, पर अपनी विशेष अधिकारी गांड को BMW में बिठा के सिंपैथी मांगोगे तो कतई चूतिया लगोगे। हेटर्स कहाँ से आते हैं ज्ञान की चूदी? जैसे जैसे इन्फ्लुएंसर की उपस्थिति बढ़ती है उस पे दूसरे कल्चर की आंखें भी पड़ती हैं। लेकिन हर इंटरनेट कल्चर अलग है, तो अगर वो इन्फ्लुएंसर उनके कल्चर से उल्टी बात कर रहा हो तब वो लोग बन जाते हैं हेटर्स। इन्फ्लुएंसर्स और हेटर्स के बीच एक खेल चलता रहता है जहाँ दोनों पार्टी अपने कल्चर बदलते रहते हैं, लेकिन फिर What एक the? ऐसा वक्त आता है जब दोनों एक कल्चर का हिस्सा होते हैं, तब वो हेटर सपोर्टर में बदल जाता है। फिर जैसे ही वो दोनों अलग कल्चर में जाते हैं कहानी वापस पलट जाती है। और क्या तुम्हें पता है, मैं 2 साल पहले टैक्सी चलाता था, फिर मेरी लॉटरी लग गई। ऐसे बताने को तो मैं तुम्हें Whoa, hold on. What? I missed that. What? It Yeah. just flew by. Indian model agrees to arranged marriage with a taxi driver after he wins. Is that 9 million rupees or 94 million rupees? It's 94 million rupees. Wow. This is not real, right? I don't think so. I think he just put his face on that. Either he put his face there, or you see it's written by a Natalie Van Diggeren. So maybe she just didn't know who he was. Maybe this guy has the same name as him. Yeah. And she just put his name And his face popped and up. his face popped up. And then it's like, oh, wait, are you a taxi driver? That's classic. मेरी लॉटरी लग गई। ऐसे बताने को तो मैं तुम्हें कुछ भी बता सकता हूँ, लेकिन बिना सबूत के बातें सिर्फ बकचोदी लगती हैं। इस वीडियो में yeah, I ये like जो that 3 one. लौंडे हैं इन्हें मैंने बनाया था अपने हेटर्स के साथ घुलने के लिए। हाँ 007 वाली बकचोदी। खैर कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग सिर्फ तुम्हारी टांग नहीं खींचते बल्कि तुम्हारी टांग को धीरे धीरे काट के तुम्हारी आंखों के सामने खाते हैं। ऐसा ही एक प्लेटफॉर्म है रेडिट। यहाँ लोगों से ज्यादा एक कुत्ते की इज्जत की जाती है। ये तब भी ठीक है, वरना ट्विटर पे खुद #बैन ट्विटर ट्रेंड कर रहा होता है। खैर मैंने इन तीनों लौंडों का एक रेडिट पेज बनाया जहाँ मैंने अपने आप को हिट करते हुए मीम्स डाली। ये मैंने इसलिए किया क्योंकि रेडिट और मेरे बीच कुछ सामान्य नहीं था, तो मुझे एक ऐसा बकरा चाहिए था जो कटने के लिए तैयार हो। मैं इसकी वजह से मुझे रेडिट पे वो मिली जिसकी मुझे कोई उम्मीद नहीं थी, इज्जत, लेकिन कुत्ते जितनी नहीं। तब मुझे समझ में आया उनका इंटरनेट कल्चर। उस पेज के जरिए मैं इन लोगों के साथ खेल कूद सकता हूँ, पर असल में इनकी और मेरी दुनिया का कोई तालमेल नहीं है। तभी मुझे वो हेटर्स लगते थे। मैं उस पेज पे अभी भी जाता रहता हूँ और हम एक दूसरे की टांग खाते रहते हैं। वाओ क्या लव स्टोरी है। जब कोई व्यक्ति किसी इन्फ्लुएंसर की पोस्ट पे हेट कमेंट छोड़ता है तब वो उस इन्फ्लुएंसर के बारे में नहीं बल्कि उस व्यक्ति और उसके इंटरनेट कल्चर के बारे में है। इन्फ्लुएंसर और हेटर्स दोनों का एक ही मकसद है। अब What? I mean, I'm just saying, like, that's a good point to remember, is like when someone is saying something mean to you and they're being a hater, it says more about them than about you. And it's a reflection of like whatever pain or suffering that they're feeling inside. Yeah. And they're projecting it onto you. So Right. it's nothing to do with you. अपने इंटरनेट कल्चर को सबसे कूल साबित करना एक हेटर इन्फ्लुएंसर से नहीं, इन्फ्लुएंसर के ख्यालों और हरकतों से ट्रिगर होता है। देखो ये वो वीडियो नहीं है जहाँ मैं तुम्हें बताऊं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। दूध पीते बच्चों से लेके चाय गटकते बुढ़ों तक कोई अच्छा बुरा नहीं है, सब अपने कल्चर के हिसाब से चल रहे हैं। और अगर हम उनसे वो छीन लेंगे तो सोशल मीडिया का पॉइंट ही क्या है। Very interesting video essay. Yeah.
सोशल मीडिया पे तुम बकचोदी भी कर सकते हो और फूट भी सकते हो, लेकिन ये हक अकेला तुम्हारा नहीं है। सोशल मीडिया पे कोई किसी को कुछ भी कह सकता है। यहाँ अंबानी से लेकर रिक्शा वाले तक सब सामान्य है। बेचारे बड़े लोग, उनसे असली जिंदगी में सब सर करके बात करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे एक खोके वाला गांडू लिख के चला जाता है। बताओ एक अमीर इंसान कैसे जिए ऐसी दुनिया में। बेचारे भगे भगे जाते हैं पूरी दुनिया को बताने, एक खोके वाला मुझे गांडू कह रहा है। हमें जैसी जगह चाहिए सोशल मीडिया हमारे लिए वो जगह बन जाती है। कुछ लोगों के लिए काम की जगह है, कुछ लोगों के लिए बकचोदी की, कुछ लोगों के लिए ये बस एक कबाड़ है जहाँ वो अपना गुस्सा निकाल सकते हैं। और यही है सोशल मीडिया का जादू। अब इससे ज्यादा ना तो मैं ज्ञान चोद सकता हूँ और ना तुम ले सकते हो। तो यार बस ये टेडेक्स वाली बकचोदी यही खत्म करते हैं। अगर तुम्हारा मुकुट चक्र खुला तो लाइक मारो। एम करते हैं 5 मिलियन लाइक्स के लिए। ये हम क्यों करें ज्ञान की चोरी? ताकि मैं शॉर्ट्स डालने पे मजबूर ना हो। टीवी की इंडिया की आवाज की सेल चल रही है। सारे प्रोडक्ट्स पे 70% तक ऑफ चल रहा है। तो भक्के movie.in पे जाओ, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो। इस चैनल पे मैं खाना बनाना सिखाता हूँ और रोज 2 वीडियोस अपलोड करता हूँ। अब चलो यार, तुम्हारी तरह वेल्ला नहीं हूँ कि YouTube पे बस बकचोदी करे जाऊं। असली काम भी है मुझे। हाँ, आ रहा हूँ दीदी, पालक बनाना ना। That was a thorough essay. And he Yeah. crammed a lot. I just wish that I mean, he was moving fast. Like golly. That was like an Aaron Sorkin piece. It's just like at a Yeah, flip. like, and he's covering some really big ideas as well. You know, I mean, this is all things that I feel like we've kind of discussed about social media culture. I mean, this has been a discussion lately. I mean, Yeah. for the better part of, I'd say, the last few years, it's been very much part of the conversation. I think it's especially come up because of pandemic and all that stuff. But even Yeah. before that, you were starting to see this surface quite a bit. I remember seeing an image of a man in a bathroom stall, and it looked like he had a I don't know what we're allowed to say on YouTube, but it looked like he had a DRUG of some kind intravenously plugged into his arm. Uh-huh. Okay, you following me? Yeah. And so, but it was social media. Yeah, Yeah, because it kind of is, and like sometimes I really have to catch myself because Or it's, Jaby has to catch you. Yeah, or Jaby has to catch me, and I'll put my hands up and say I'm not good at this, but I do find myself just mindlessly scrolling all the time. I stop myself all the time. Yeah. If I see I'm scrolling like kind of mindlessly for about 20 seconds, I just put the app away, or I'll put the phone down. I've totally caught Achara just like mindlessly scrolling through the Instagram. I'm I like, know. Achara, what are you doing? She's like, nothing. I wasn't looking at anything. I was working. My God, leave me alone. I'm glad that he is having this conversation with his audience. I think it's actually crucial. And CARRYMINATI obviously recognizes how much power and influence he has as an influencer, as it were. Yeah. And it's good of him to use his platform to spread a message of awareness of this kind. The conversation is, it's reaching the point where that's what the Matrix movie is about, right? So it's like, that's how important this conversation is. It's so important that, you know, the iPhone's telling you, hey, you've been on the, it's a thing you can opt out of if you want, but like there's an option for that phone to warn you, like you've been on the phone for a while. No, like, you know, it tells you your usage time and all that Your stuff. screen time. Does that actually help anybody? It helps me. Like if I see my usage time is 3 hours a day, I'm like, whoa, that is way too much. What's your usage? Like 4 hours. That's too much. That's way. I mean, it depends on what you're doing. The thing about it is, we use our phones for entertainment as well. Yeah. And so it's like And work. and work. I do work on my phone. Exactly. And so it all depends on what you're doing. If you're just mindlessly scrolling through Instagram for 2 hours, that's obviously not productive. But if you're like, and this is such a weird gray area. The thing about it is everyone has a different form of entertainment. I personally think, though, that we should really think about that because, you know, one can debate, well, Instagram's entertainment. It's entertainment. That's like, you might like watching an hour-long YouTube video or a 10-minute essay. That person over there likes to scroll through Instagram for an hour. But the thing about it is, I can have a conversation with you about that YouTube video I watched for an hour or the CARRYMINATI social media essay. I can talk to you about that. Have you ever tried to talk to someone after they've scrolled through Instagram for an hour? They can't tell you anything they've looked at. No, but you can talk to the people in the comments, or you can have conversations with people on there. Yeah, but really? Like, most people aren't doing that. Yeah, I know. You know, and so I'm just saying, I think that is dangerous. And the one of the things he brought up that was really important was the comparison thing, because I feel like we are all victim to that, including myself. Like, I see stuff
and I get major FOMO. I get major comparison issues. I get major imposter syndrome. I get major depression sometimes going on Instagram. I'm like, I'm not doing enough. And it's like I am working my ass off all day, every day, and I have the audacity to sit there and look at someone on Instagram and go, I'm not doing enough, and feel bad about myself and shame on me, for not doing enough. Well, yeah, I think comparison is always going to cause some sort of misery, right? Because it makes you not appreciate where you are right now. That is a problem. Another thing that is kind of related to that he brought up was this idea of, like people kind of flaunting their wealth or whatever on social media. And that is something that's also problematic, because I have heard of some people who've decided like they want to be influencers, and then they get into debt trying to live that lifestyle that they see other people living on social media, going on trips, staying at hotels, buying designer goods that they don't have the means to buy, and they're just maxing out credit cards all for some Instagram photos so they look like they're living that life, Yeah, that bugs me. It's really bad. Don't do that, guys. I've seen people stop themselves from eating their food when it arrives because they want that perfect photo that they've got to have. And it's like, it's not just the photo of the food anymore. It's the photo of, we got to get the photo of us cheersies. We got to cheersies. No. We got to cheersies again. It's like, you're not living the moment. Live the moment. Yeah, I've noticed that actually, you guys probably know, I don't post as much on Instagram these days. I post like once a month, if that. I know. I probably should post more, but it is just because a lot of the time when I'm doing stuff, I'm like, I'm actually enjoying being in the moment. Yeah. And I don't feel the need to take a picture and share a lot of the time, or I'm just lazy. Yeah, I think the most dangerous thing that he talked about is the comparison thing. You shouldn't measure your worth against someone else's success. Yeah. You just shouldn't. Like, their success is theirs, yours is yours, and you gotta compete with yourself at the end of the day. How does where you are stack against where you were yesterday? Yeah. And that's it. Yeah. And you just keep playing that game right there. Because trying to keep up, there's a saying we have over here, it's called trying to keep up with the Joneses, which is like keeping up with your neighbors. Oh, they got a big TV. You got to get a bigger TV. And then they see you got a bigger TV, so they got to get an even bigger TV. Oh, they got a flashy car. You got to get a flashy car too. Yeah. That's what's happening with the social media thing. Yeah, except it's so much more magnified on social media. I feel like it's worse. I try not to show off my shit on Instagram. That's the funniest thing. It's like, I see people doing that all the time and showing off their lives, and then showing off the being friends with actors and actresses can kind of be the worst sometimes, because then you see like their deadline posts of like, now they're in this thing. I'm like, what are you self-congratulating? Why are you showing this to me? No, because it's also work. That's what they tell actors, is like, oh, you're supposed to promote your stuff on your social media so that if like someone from a casting agency or a production company looks at your social media, they can also see what you've been in. It's stupid. There was something that he talked about in this video when it came to the Reddit stuff that I wasn't quite clear on. Neither was I. The question I have, and maybe you guys can kind of clarify this for me in the comments, is he talking about like some sort of sense of self-loathing that he has, that he created this Reddit where, the only thing that he has in common with his haters is he's like as mean to himself as the haters are to him, and that's what they have in common? I wasn't sure if that was the thing that was trying to be put across, but I do wonder when I look at these types of videos from Carrie, I'm like, Carrie, are you okay? What's going on that over the past few videos, there's been this kind of reflection on social media culture and kind of like cancel culture and haters and stuff like that. And I just wonder if maybe he's going through a lot of that himself, and he's using this as a platform to kind of like sort out his thoughts and just get it out there. He has a different vantage point than most people. And I think that we have a similar vantage point in that you get to observe how the world behaves in a way that I feel like only a YouTuber could really see. Right. If that makes any sense. Maybe other people who are like full-time Instagrammers can see it, but I feel like when you're an Instagrammer or a TikToker, the way you look at things is a little bit different than if you're a YouTuber. I don't know if that makes a whole lot of sense. It's just like the shape of that medium is a little bit different, and
energy and the output and all that stuff is a little bit different. And so yeah, each platform is kind of different. Yeah, and so I don't really know how to articulate what I'm trying to communicate. Hopefully it makes some kind of sense just intrinsically. You get what I'm saying. But he also doesn't put out videos all the time. Yeah. And so he has a lot of time to reflect. And I think that's when you're successful on YouTube, if you take a moment to just sit down and reflect, you actually can do that. And most people don't get to do that. You get to reflect in a way that actually a lot of people got to do over the pandemic because they couldn't work. Yeah. But like YouTubers have been having that for a while. So I think that's what his wealth and success has afforded him, is the ability to see all that and the dangers within from all sides. Sure. And so I like what he's doing here. I think it's cool. And he probably also feels somewhat responsible for some of the vitriol that's out there, you know, and he wants to sort of take the reins back on that and go, no, it doesn't need to be that way. And this is a really cool like artistic mesh of everything that is CARRYMINATI, because he used to do this kind of stuff where he's just doing a commentary on some like video gameplay footage, but he's also dropping in a bunch of memes, and he's dropping in the animation, which, you know, he did like 3 videos ago or something like that. I like what he's doing here. I think it's really cool. I like the message. I don't expect all of his videos to be like, you know, powerhouse messages, but I'm enjoying this so far. Yeah, this is really great. So you guys, thanks so much for hanging out. Hopefully you enjoyed that. And please subscribe if you haven't already. Hit that bell icon, all notifications, and vote this video up to let YouTube know you're enjoying what you're watching. I'm Jaby Koay. This is Achara Kirk. Peace out.